Hi, good evening, everyone. Hello, Namaskar. Hello, Annapurna. Hello, sir. How are you? All well, all well. Thank you. So, all right, so this is going to be a very short video, quick discussion on LIC IPO. I think it's the most talked about IPO in recent times for good Mm-hmm. reasons as well as for bad reasons. एक तो बड़ा IPO था लेकिन अभी बहुत छोटा हो गया. But nonetheless, unfortunately, market is not in a good mood to probably discuss LIC IPO. But I think it's an IPO which is worth discussing and figuring out what should we do with this IPO. Right, Anupuna? This is the question. Right, sir. Yes, sir. So honestly, the question arose when Papa was like, "Beta, LIC का IPO आ रहे हैं. Like, Hmm. let's apply for it." Hmm. I was like, "I'm not so sure. Let me Yeah. check." That's what Vivek sir has taught me. Do your own Hmm. research. Yeah. Very nice. So, so I looked at the draft red herring prospectus. मुझे समझ Hmm. नहीं आया. So I went Hmm. for the IPO note जो हमारी Hmm. stockage में है. Hmm. So, sir, the rating was average there. Hmm. तब मैंने बोला maybe it's not the right IPO that we should apply for. But I'm not sure why it was average though, sir. So maybe you can Yeah. help us understand that. Yes, I will do that. बट उसके पहले आपको बैकग्राउंड पता है एल आई सी आई पी ओ पहले एल आई सी की जो आई पी ओ की बात हो रही थी तो इट वॉज वेरी लार्ज साइज आई पी ओ ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप का आईपीओ की बात हो रही थी अभी एल आई सी का आईपीओ 6 लाख करोड़ का खाली मार्केट कैप में आ रहा है विच इज लाइक दे हैव ऑलरेडी स्लैश देयर वैल्यूएशंस बिकॉज ओवरऑल लास्ट कुछ महीनों के अंदर में वैल्यूएशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव गॉन डाउन बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ एक नेगेटिव ट्रेंड में हम लोग चले गए हैं तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट आल्सो रियलाइज कि अभी इतना हाई वैल्यूएशन पे शायद आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होगा एंड Mm-hmm. बिकॉज लोअर वैल्यूएशन पे गवर्नमेंट ने इशू आईपीओ लेके आया तो the size of the IPO has also been reduced. It's not as high Oh. as it was planned earlier. Now, uh, insurance as an industry, हमेशा हमको लगता है कि it's a sunshine industry because India में penetration of insurance is low. Hmm. हम लोग शहर में रहते हैं तो हमको फिर भी इंश्योरेंस का रेलेवेंस पता है बट अगर आप डीप इनसाइड भारत जाओगे तो वहाँ पर इंश्योरेंस अभी भी एक एसेंशियल कमोडिटी नहीं है सो इसलिए लगता है कि डेंसिटी ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस शुड गो अप तो ग्रोथ भी हुआ है सेक्टर के अंदर में बट वेदर दैट ग्रोथ इज सफिशिएंट इनफ टू इन्वेस्ट इन एन इंश्योरेंस कंपनी लास्ट कुछ दिनों से देखोगे तो insurance companies have not done well overall because Mm-hmm. probably there is a mismatch. Expectation है कि grow करेगा, but Mm-hmm. businesses are not showing that that kind of growth is happening. LIC का IPO का Okay. एक बिकॉज एल आई सी पी एस यू है तो Mm-hmm. एक इनहेरेंट रीजन हो जाता है लोगों को नहीं अप्लाई करने में सब जो स्मार्ट मनी होता है जो Mm-hmm. ऑब्वियसली रिटेल लेवल पे हम सबको एल आई सी ऑलवेज अच्छा लगेगा बिकॉज एल आई सी हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू आवर हार्ट but the Hmm. problem is that smart money doesn't think that PSUs are the right place to invest your money. And LIC is huge. So let me take help of my report जो हमने स्टॉकेज में पब्लिश किया है. So let me share my Sure, sir. screen. Yeah. So I'll go to stockage. Are you able to see my screen? Yes, sir, I can. Okay. So I think you're talking about this report. Stockage में अगर हम IPO सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे Mm-hmm. ongoing IPOs जो है वो लिस्ट हो जा रहे हैं. Right. And if you see the subscription times, ये Mm-hmm. ये जो अपडेट हुआ है ये आई थिंक ये कल का अपडेट है परसों का अपडेट है ये नहीं कल का अपडेट है इट्स Okay. 1.44 सब्सक्रिप्शन लेटेस्ट अपडेट अगर हम लोग Mm-hmm. देखेंगे सब्सक्रिप्शन का सो एल आई सी आई पी ओ लाइव सो लेट अस लाइव एन एस सी इंडिया ओके लेट्स गो टू एल आई सी आई पी ओ लाइव सो अभी क्या स्टेटस अपने को पता लग जाएगा Mm-hmm. consolidated bids yeah. So QIPs जो कि serious money है only 0.67 times okay
नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स 1 टाइम, रिटेल इन्वेस्टर जिसका एप्लीकेशन साइज इज लोअर देन द HNIs 1.39 times, okay, and employees 3.46 times, policy holder 4.46 times. So अगर आप देखें तो सब्सक्राइब कौन कर रहा है, ऑल्दो इनके लिए कोटा कम था, बट Hmm. कम कोटा था इसीलिए नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय एम्प्लॉइज एंड पॉलिसी होल्डर इज हाई, but generally interest among retail is also not so high, and also Hmm. non-institution जो कि important non-institution और QIB ये एक important part of market है, because these are the guys who have serious money, इनका भी Hmm. participation overall IPO के अंदर में weak है, तो Hmm. it speaks also a lot about the IPO that overall interest IPO के लिए थोड़ा muted है. अगर हम लोग उस रिपोर्ट में Right. जाएंगे तो as you said the our internal team has given it as an average rating, तो Mm-hmm. इसका रीजन एवरेज रेटिंग देने का, सो इफ यू रीड दिस रिपोर्ट, इट्स अ वेरी लेंथी रिपोर्ट, 25-26 पन्ने का Mm-hmm. एक रिपोर्ट बना हुआ है. तो इस रिपोर्ट के अंदर में हमने कॉम्प्रिहेंसिव उसका एनालिसिस किया है कि क्या मार्केट है, कितना बड़ा साइज है, कैसे ग्रोथ हुआ है LIC का, किसमें कितना मार्केट शेयर LIC का है, किस प्रोडक्ट पे. तो मैं इतना डिटेल में रिपोर्ट में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज आवर ऑडियंस विल गेट बोर्ड. I Mm. will straight away get into the last part of the report, which is basically talks about the strengths and the weaknesses and the rating. Okay, Right. so it is the largest life insurance in India. Obviously, it's one of the top, 5, top 6 in the world as well. Mm-hmm. um, the problem with LIC is that इसका जो market share है वो constantly reduce हो रहा है, because private ones have the higher tendency of giving better services. Although claim के अंदर में LIC का कोई मुकाबला नहीं है. The claim ratio is far higher in LIC, Mm-hmm. which is good as well as bad. Good as a policy holder and bad as an investor, because अगर आप Mm. सारा मैक्सिमम क्लेम पास कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका बैलेंस शीट में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, करेक्ट. Right. If you see digital, which is the need of the hour, everyone is trying to penetrate deeply using digital. Mm. LIC somehow has not been able to capitalize on that digital growth which the whole country has witnessed. तो ये इसके कारण इनका जो मार्केट शेयर है वो भी लूज हो रहा है. तो स्ट्रेंथ क्या है, फॉर्मिडेबल एजेंट नेटवर्क, बट धीरे धीरे क्या होगा, एजेंट नेटवर्क म्यूटेड होते जाएंगे, and you will see more and more ऑनलाइन पेनिट्रेशन. सो एजेंट का रेलेवेंस Mm. धीरे 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 कम होता जाएगा. ब्रांड Right. का डेफिनेटली एक ट्रस्ट है. आज भी हम लोग सबको मेक श्योर करते हैं कि LIC का हमारा एक पॉलिसी होना चाहिए, बिकॉज वी ट्रस्ट दैट यहाँ पैसे अपने डूबेंगे नहीं. स्पेशली अगर Mm-hmm. हम कॉन्टिजेंसी की बात करते हैं, तो इफ समथिंग Mm. हैपेंस इन फैमिली, देन LIC इज द वन व्हिच इज मोर ट्रस्टेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस. तो स्ट्रेंथ तो काफी स्ट्रांग है, बट अगर आप थ्रेट देखेंगे तो कंपटीशन का थ्रेट है, और पीयर ग्रुप जो है उसने बहुत अच्छे से डिजिटल कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड किए, तो वहां पर LIC आई थिंक इज येट टू कैच अप. और डिजिटल ऐसा होता है ना कि इसमें स्नोबॉल इफेक्ट होती है, कि अगर आप ऑलरेडी डिजिटल में एक प्रेजेंस है तो दूसरे लोगों को आपको बीट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कैपिटल डालने पड़ते हैं. एंड LIC काइंड ऑफ Mm. एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट invest that kind of an amount which will give them edge over the other digital players. So वहाँ I think they have kind of lost it, I would say. थोड़ा टाइम लगेगा उनको अगर वो रिकवर करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मेजर थ्रस्ट जाना पड़ेगा डिजिटल में, which I mean being a Mm. government, it kind of a difficult thing to do. अपॉर्चुनिटी Okay. बहुत है, लेवल ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया एंड इंक्रीजिंग अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग टू द कस्टमर्स. सो ये बहुत अभी हो रहा है. जैसे जैसे फाइनेंशियल पेनिट्रेशन हो रहा है, ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है कंट्री में, वैसे Mm-hmm. वैसे न्यू बैंक अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं. पीपल आर मोर बैंक्ड नाउ. Paytms of the world have make sure that even if people without bank, they can be there on the financial ecosystem. तो अब उससे क्या होगा कि एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बिल्ड हो गया, उसके टॉप में काफी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी सेल होंगे. नाउ द क्वेश्चन इज Mm. किसका सेल होगा, LIC का होगा कि बाकी लोगों का होगा. तो अनफॉर्चुनेटली Right. LIC नेगेटिविटी अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कितना हेल्प कर पाएंगे इंश्योरेंस सेल करने में. सो Mm. वीकनेस है कि मार्जिन्स कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रही हैं, इनका परसिस्टेंसी रेशियो कम है, और गवर्नमेंट बॉडी है तो इसके अपने चैलेंजेस हैं. सो Mm. देखो मैं इसको इस तरह से सोचता हूँ, Mm. लेट अस दिस पॉइंट. मैं इस तरह से सोचता हूँ कि मेरे पास तो इतने रुपया है, राइट.
अब मैं इस रुपए से क्या करूं, LIC में डाल के उसको कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दूं, या मार्केट क्योंकि गिर गया है तो हो सकता है मार्केट Hmm. अभी कुछ स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी दे दे जहां पे मैं हो सकता है इंटरेस्टेड हो जाऊं एंड आई इन्वेस्ट. सो इज इट प्रूडेंट टू इन्वेस्ट इन LIC और इन TCS राइट नाउ, बिकॉज TCS भी Hmm. गिरा हुआ है, LIC Right. आएगा, हो सकता है कि Hmm. हमको लिस्टिंग मिल जाए, इसका पॉसिबिलिटीज कम है बिकॉज लिस्टिंग गेन तभी मिलता है जब सब्सक्रिप्शन बहुत हाई होती है. तो सब्सक्रिप्शन Hmm. डेटा भी ये कर रहा है कि लिस्टिंग गेन तो उतना नहीं आएगा. सो देयर इज नो रीजन व्हाई वी शुड अप्लाई टू LIC IPO. बट फिर भी अगर आपको LIC से इतनी वो है कि भाई करना ही है मुझे, LIC है अपने घर की कंपनी है, तो फिर आप LIC के IPO में अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे स्टॉकेज से भी आप अप्लाई कर सकते Okay. हैं without opening any account with anyone. Just click and you will be able to apply using Stockage. Summing up, can I say that there is an ongoing or an upcoming disruption in the insurance sector which LIC might not be able to ride and take benefit of? Or Let me put it the other way. Other players probably are better placed to take advantage of that. So LIC की okay. कोई गलती नहीं है, because Hmm. LIC का एक तरीका है काम करने का. They will continue to do what they are doing because they Hmm. always believed in branch and the agent network. And I think the bigger growth will come in the digital network than on the agent network. So, and it's very Okay. difficult for a company to change the DNA uh, Hmm. from a offline agent network organization to a Hmm. pure play digital network. जब भी कोई नया कंपनी चालू होता है ना तो वो डिजिटल फर्स्ट हो सकता है, पर जो पुरानी Right. कंपनीज है जिनके पास ऑलरेडी बैगेज है उनको ट्रांजिशन करना डिजिटल में इट्स नॉट एन इजी टास्क टू डू. सो LIC विल हैव disadvantage, I will say. Okay. Got it. So, Hmm. another question that I had in my mind. So IPOs जनरली आई नो इन्वेस्ट करने के लिए लोग खरीदते हैं कि रख के मैं इसको लॉन्ग टर्म रखूंगा. Hmm. But so when I have to talk about trading, Hmm. so though we do analyze the price charts, the behavior, but can Hmm. I also judge the sentiment? Ki because there's a lot of sentiment involved in any company that is launching its IPO. So maybe I Hmm. buy it right now at a lower price. I apply Hmm. for it and then hide Hmm. seller when the price goes up in the market. Hmm. So is there a possibility of trading in the IPO as well? Well, a lot of people do this IPO, trading, which is technically means that आपने अप्लाई कर दिया और आपको आ Hmm. गया. अगर क्या ओवर सब्सक्राइब Hmm. IPO होता है तो आने की संभावना भी कम है बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ए लॉटरी सिस्टम, राइट. और अगर Right. आपको आ गया तो क्योंकि ओवर सब्सक्राइब है, प्राइसेस ऊपर खुलने के चांसेस हाई है, तो आप उसमें Hmm. बेच देते हैं. तो जितने दिन के लिए आपने IPO अप्लाई किया उतने दिन का आपको रिटर्न मिल जाता है. और IPO फंडिंग बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जिसमें HNIs के लिए वो ज्यादा वैलिड है कि आपको एक्स्ट्रा लिवरेज बैंक या NBFC देता था ताकि आप और ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं. जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे जितना प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि आपको शेयर आ जाएगा. तो Hmm. वो जो एक IPO का ओपनिंग का ट्रेड है वो एक अलग ट्रेड है. और उसके बाद Hmm. में अब वो स्टॉक किस तरह से प्लान आउट करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि IPO होने के बाद उस स्टॉक में मोमेंटम कैसा आ रहा है. तो वहां पे आई थिंक कुछ दिन तक उस स्टॉक को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि फाइनली वो स्टॉक कहाँ जाके स्टेबल हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है. एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक फ्यू Hmm. एग्जांपल. Okay. सो लेट अस गो टू से अगेन ट्रेड अपने इधर चलते हैं, स्टॉकेज में चलते हैं और कुछ लेटेस्ट IPOs आए ना उसके बारे में चर्चा करते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड टू दैट. Okay. सो लिस्टेड IPOs में चलते हैं. तो लेट अस टॉक अबाउट फ्यू नोन नेम्स. So, Maybe Ruchi which one? Soya Ruchi Soya, Soya? maybe? Ruchi Soya? Okay, let's talk about Ruchi Soya. So, Ruchi Soya. Let's see. Actually, the problem is Ruchi Soya के baggage है पुराना, तो chart इसका ठीक से नहीं आएगा. So Oh, let us see some other stock. छोटे-छोटे so बहुत IPOs आए maybe थे. Zomato or Nykaa, Paytm, someone. Okay, The let's most let's talked take about this one. IPO. एक काम करते हैं जो Okay. लेटेस्ट इसी को देखते हैं. Okay. नानावती वेंचर से क्या है देखते हैं. मुझे नहीं Mhm. पता है क्या है, but let us. ओके, अब ये IPO ये अभी लिस्ट हुआ है. दिस इज अ वीकली चार्ट. सो लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू अ डेली चार्ट. ओके, सो ये दिस जस्ट वाज लिस्टेड ऑन 6th of May.
सो यस्टरडे ये लिस्ट हुआ है, तो इट्स, अब आप इस दिन कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि आप एक मे बी आप जिस दिन लिस्ट हो रहा है उस दिन 30 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि वो 30 मिनट का चार्ट में वॉल्यूम के साथ में सस्टेनेबिलिटी हो रहा है क्या। ओके, बट लेट्स सी सम अदर स्टॉक जिसमें जिसमें थोड़े दिन का हमको हिस्ट्री भी मिल जाए। लेट्स सी वेदांत फैशन, इट्स वेरी गुड, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। which brand? वेदांत फैशन, झगड़ा की कंपनी है अनुपुना जी, ये कह सकते हैं। मान्यवर, राइट, मान्यवर। या अब इस कंपनी का लिस्टिंग इसका देखते हैं, वेदांता लिमिटेड आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, वेदांत फैशन, या देखो मान्यवर के नाम से सर्च कर लेते हैं यार, या सो ये इस दिन इसका लिस्टिंग हुआ, ऑलराइट, एंड उसके बाद अब नाउ यू हैव लर्न कैंडल स्टिक फ्रॉम मी, राइट? राइट सर। इनफैक्ट कैंडल स्टिक पे मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था, डिड यू सी दैट exhaustive video which I created on candlestick, आपने देखा? हाँ, राइट, मैंने देखा था। ये बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, just for the benefit of other learners if they have not seen, क्योंकि आपको मैंने कैंडलस्टिक का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, राइट। या I recorded a more elaborate candlestick, ये वाला 15 कैंडलस्टिक पैटर्न वाला, this is very interesting, अगर आपने नहीं देखा तो you should see this video. So अब कैंडलस्टिक पैटर्न में देखोगे तो इफ यू ऑब्जर्व दिस वेरी क्लोजली, तो आप टिपिकली क्या करते हो, ये जिस दिन ये लिस्ट हुआ है उस दिन का हाई और उस दिन का लो को आप मार्क कर लेते हैं, क्योंकि जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन का हाई लो इंपॉर्टेंट है ना, राइट? हाँ, और साथ साथ में जिस वीक ये लिस्ट हुआ है उस वीक का भी हाई लो को मार्क कर देना चाहिए। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट वीक, हाई इज द सेम, लो इज हियर। ओके, नाउ अब इस स्टॉक के अंदर में मोमेंटम आया है कि नहीं वो मुझे कैसे पता लगेगा? ऑब्वियसली रिलेटिव स्ट्रेंथ से मुझे नहीं पता लगेगा, बिकॉज मैं आरएस 55 पीरियड फॉलो करता हूँ, सो इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट 55 डेज चाहिए बिफोर आरएस कम्स इनटू पिक्चर, राइट? सो अगर इस स्टॉक में मोमेंटम देखना है तो आइडियली क्या होना चाहिए, अगर ये अपना हाई को तोड़ दे तो इसका मतलब ऐसा मोमेंटम आ सकता है, और अगर अपना लो के जब तक नीचे है तब तक इसको अपने को नहीं लेना है, राइट? We are talking about momentum, we are not talking about value, right? So ये इसके नीचे में ट्रेड कर रहा था तो मेरे इंटरेस्ट में नहीं है, यहाँ पर आया मेरे इंटरेस्ट में नहीं है, बट इसके ऊपर जैसे ट्रेड किया यहाँ पे दिस कैंडल, ओके, इसके ऊपर में जैसे गया यहाँ पर एक इंटरेस्ट आ गया, बिकॉज उस दिन इसने इसके ऊपर में ट्रेड किया है लेकिन क्लोज नहीं किया है। ओके, सो वी लेट्स सी द लाइन, क्लोज नहीं किया इसने, नो, राइट? सो क्लोज कब किया? इस दिन क्लोज किया, सो दिस इज द क्लोजिंग लेवल। ओके, सो हियर आई विल बाय, तो 1000 रुपए के ऊपर जब हो गया तब मैं बाय करूंगा, बिकॉज उस दिन का लिस्टिंग दिन का हाई के ऊपर में ट्रेड किया है। ओके, मैं बाय किया हूँ, स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा? अगेन यू आर ट्रेडिंग मोमेंटम, सो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। So this level, which is almost 1000 rupees you are buying, and stop loss should be ये वाला जो कैंडल है इसका लो, which is 960। तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस में आप राइड कर सकते हैं। आइडियली आपको, आई मीन जब इस तरह का आईपीओ ट्रेड करते हो तो यू आर नॉट ट्रेडिंग फॉर 1:2 1:3, इसमें आपको लंबा राइड करना चाहिए, एंड यू कैन कंसिडर सम काइंड ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर। तो जैसे सुपर ट्रेंड अगर मैं यहाँ पर देख लूं, सो दिस इज सुपर ट्रेंड। ओके, तो यहाँ से ऊपर गया, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, सो मेरे लिए ये या तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है सुपर ट्रेंड, या ये कैंडल का लो को हम स्टॉप लॉस मान सकते हैं। तो आई विल कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू दिस स्टॉक बिकॉज दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव दिस लेवल। अब ये नीचे आके सपोज यहाँ आके स्टॉप लॉस हिट करेगा तब मैं प्रॉब्लम स्क्वायर अप कर लूंगा, अदरवाइज ये स्टॉक में मोमेंटम हाई होने की संभावना बहुत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टॉक कॉल्ड ज़ोमैटो।
ठीक है, Right. तो ये उल्टा हो गया। ओके, लेट्स सी। तो दिस वाज द लिस्टिंग प्राइस। तो ये हाई को मैंने मार्क कर दिया, ये लो को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। Hmm. तो वीकली, ओह, वीकली एंड डेली हाई लो इज द सेम। ओके, Right. सो मैं एंटर कब किया? So this crossed high multiple times, went down, crossed high multiple times, went down, crossed high here, then went down. So this strategy did not work in Zomato. Although there was a trend, but ये high के आसपास ही ट्रेड करता रहा, और फिर फाइनली जब यहाँ का लो तोड़ा, तब से ये लो ही मेंटेन कर रहा है। तो सपोज आपके पास जोमेटो होता, तो आपको पता है ये लेवल के नीचे मैं एक बार बेच दूंगी, अगर होता तो। अगर, यहाँ पर right. जोमेटो ने कभी भी हमको मौका नहीं दिया लेने के लिए, बिकॉज एवरी टाइम वी वर बाइंग, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो रहा था। इट वाज नॉट वन ऑफ दोस ग्रेट स्टॉक्स टू ट्रेड फॉर आईपीओ मोमेंटम। Got it. So what I was trying to say कि IPO, one is you trade for the issue and that is dependent on कि कितने ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, क्या इशू है, कैसा इशू है, तो आप उसका लिस्टिंग गेन के काम करते हैं। और दूसरा है कि लिस्टिंग होने के बाद में आप देखते हैं मोमेंटम कब बिल्डअप हो रहा है, एंड मोमेंटम के लिए आप पार्टिसिपेट करते हैं। मोमेंटम में क्लियरली रिस्क रिवॉर्ड इशू डिफाइंड है, और लिस्टिंग गेन तो आप प्रेडोमिनेटली जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन बेच के ही अपने एग्जिट करने का वर्किंग रखते हैं। Got it. Got it, sir. So that was my questions. Okay, do we have any question from So, anyone related to मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा questions होंगे, because LIC का IPO तो apparently एकदम clear है कि right. नहीं हमको अप्लाई करना है। मिस हो गया, अगर सपोज पैसे बन गए कुछ लोगों के, तो वी शुड फील गुड अबाउट देम कि उनके पैसे बन गए, बट चांसेस कम है कि LIC का IPO में, स्पेशली अभी मार्केट का जो सिचुएशन है, मार्केट ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, and I've always said this, that is a very important number for a momentum investor, because market में अब sell on rise market हो गया। 200 ऊपर के रहता है मार्केट तो बाय ऑन फॉल है, और 200 के नीचे में मार्केट होता है तो सेल ऑन राइज। तो आईपीओ का सक्सेसफुल होने का पॉसिबिलिटीज कम है। Right, sir. So, एक और जो उस दिन आई थिंक एक अनाउंसमेंट भी आया था बिकॉज ऑफ द आरबीआई हैड raised the interest rate. तो सर did that also have an impact on the LIC IPO? सो सेंटिमेंट वाइज यस, बिकॉज आरबीआई ने ये सरप्राइज किया था। ऐसा नहीं था कि आरबीआई जो है कॉन्सिस्टेंटली बोल रहा है कि मैं ब्याज दर बढ़ाऊंगी। इनफैक्ट आरबीआई हैज बीन गिविंग अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। तो अचानक से आरबीआई गवर्नर आके उन्होंने बोल दिया कि मैं अब इन्फ्लेशन मेरे लिए टारगेट हो गया। उसके पहले से वो ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो इट वाज काइंड ऑफ अ यू टर्न बाय देम। तो उसके कारण सेंटिमेंट बहुत इम्पैक्ट हुआ, एंड मार्केट रिएक्टेड। तो अगर मार्केट में सेलिंग आएगी तो क्या होता है, जब सेलिंग आती है तो एसेट प्राइसेस नीचे जाते हैं, तो लोगों के घर में जो मार्क टू मार्केट गेन दिख रहा होता है वो गेन वैनिश हो जाता है। तो लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं, तो वो अप्लाई कहाँ से करेंगे। सो यस, उसका एक इम्पैक्ट तो है, प्लस यूएस के अंदर में भी हो गया, सो उसके कारण भी एक इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल एज आई सेड अर्ली 2022 में कि दिस इज नॉट द मार्केट फॉर वीक हार्ट्स। जो कमजोर दिल के हैं वो बेटर है छुट्टी ले ले। This market is going to be like this only, ऊपर नीचे करेगा। So I think 2022 is not going to be great one. Also maybe focus on learn to invest so that invest भी कर पाए उन लोग। See, investing is Investment always wise. evergreen subject, and one has to look at very long term thought process for investing. तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आपके कोर पोर्टफोलियो, इनफैक्ट आज मेरे किसी से बात हो रही थी तो मैंने उन्होंने 90 स्टॉक ले रखा है अपने पोर्टफोलियो में। So you know he has 90 stocks in his portfolio. तो मैं उनको बोल रहा था कि आप 3 पोर्टफोलियो मेंटेन करो, कोर, सैटेलाइट और ट्रैकर।
क्योंकि मुझे बोल रहे हैं कि जब भी कोई स्टॉक की इन्फॉर्मेशन आती है मैं 5-10 शेयर ले लेता हूँ। अब ये भी वैसे दिस इज नॉट अ बैड हैबिट बिकॉज until as you buy the share you will not see them on the tracker, right? So the Right. best thing to do is core portfolio with probably 30-35% allocation depending Mm-hmm. upon your age. तो अगर आप सपोज 30 साल के हैं तो 30% कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए, अगर आप 70 साल के हैं तो 70% कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और Hmm. बाकी जो मोमेंटम होना चाहिए। तो जब मार्केट Hmm. गिरेगा आपको पता है मोमेंटम स्टॉक से आपको एग्जिट करना है और आप कैश में बैठे हैं। जब मार्केट में वापस मोमेंटम आएगा देन यू कैन एंटर दो स्टॉक्स वंस अगेन, बट योर कोर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिमेन्स इंटैक्ट। तो will LIC become part of my core portfolio? I'm not sure because I see at this price point, no. If LIC comes, in fact, PSUs में मेरा experience more or less खराब ही रहा है. None of Okay. the PSUs have been able to give me money. Every time I put my money in a PSU, I get backstabbed. तो मैं थोड़ा पीछे ही हूँ अभी PSU से, until some PSU gives me confidence to come back to that zone. Right, sir. Got it, sir. So एक बहुत क्वेश्चन आ रहा है, this कैंपस आईपीओ जिनको मिला है उसमें भी इम्पैक्ट होगा? ऑफ कोर्स सबको इम्पैक्ट होगा अभी तो, बिकॉज मार्केट ऐसा है तो इम्पैक्ट तो सभी के ऊपर में आएगा। बट इफ यू वेर लुकिंग एट आईपीओ ओनली फॉर आईपीओ गेन देन इम्पैक्ट आएगा, बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके छोड़ने का प्लान बनाया है तो ऑब्वियसली उस पर इम्पैक्ट आपको नहीं आएगा। तो कैंपस आईपीओ का लिस्टिंग कब है? 28 को कंप्लीट हो गया, इसका लिस्टिंग देख रहा हूँ मैं, एक मिनट। 9 तारीख को है, 9 तारीख को इसका लिस्टिंग है। ओके। ये आपका डिटेल यहाँ मिलेगा इसमें, कैंपस एक्टिव वेयर वाले में 9 तारीख को लिस्टिंग है। तो इसका सब्सक्रिप्शन का देखते हैं कैसा रहा है। इसका सब्सक्रिप्शन अच्छा रहा है, तो चांसेस है कि इसमें उतना बड़ा इम्पैक्ट ना आए बिकॉज इसमें डिमांड हमेशा थी। कैन यू सी दिस? यस यस। बेसिकली इसका गणित बहुत सिंपल है कि अगर ज्यादा डिमांड थी आईपीओ में तो चांसेस है कि आईपीओ सक्सेसफुल होगा, अगर डिमांड कम है तो चांसेस है कि आईपीओ लिस्टिंग गेन नहीं देगा। तो एलआईसी का केस में आईपीओ की डिमांड कम है तो लिस्टिंग गेन होने की संभावना कम है। Got it, sir. Alright. Thank you, चलिए, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone for logging in and listening to me. I hope it was fruitful and important Yes, sir, investment of for you. course. Thank you. Thank you, Anupurna ji. Let's Thank you. discuss some other topics some other time. Bye bye. Yes, अच्छा, by the sure. way, Bye, sir. एक और वीडियो 7:30 बजे रिलीज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल ये कॉन्सेप्ट पे एक पहला वीडियो बनाया था, दूसरा वीडियो बनाया आज लाइव करूंगा 7:30 PM. So you have to see that second video. फिर तीसरा वीडियो भी आएगा। सो मोरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम पे इतना सिंपल लैंग्वेज में इतना कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रहा हूँ कि इवन अ young learner like you can learn it, and you can also share the same with your younger brother. They will also learn it. All right. Sure. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Bye, Bye. sir.